The lions have their own historians. The history of the hunt will always glorify the hunter. Hello dear students, my name is Sagar Pandya and I'm back with second chapter of history, 12th standard Maharashtra State Board. That is one of the most interesting and one of the most beautiful chapter of our syllabus. That is chapter number 2, colonialism. Now colonialism, when we are talking about this word colonialism, colonialism is a part of imperialism. Now since so many years we are studying about colonialism, since so many years we are studying about imperialism. What is colonialism or what is imperialism? Now colonialism is a part of imperialism. That is the act of a developed nation occupying the land of a new or a less developed nation or a distant nation and establishing their rule on the occupied country. This is known as colonialism. And what is imperialism? Very similar to that. That is domination of an undeveloped nation by a developed nation by virtue of establishing a colony there. That is called as imperialism. So what do you mean by the word imperialism? Domination of an undeveloped nation. Best example, India. By a developed nation. Best example, Britain. So domination of an undeveloped nation by a developed nation by virtue of establishing a colony there is called as imperialism. Now there were many countries like England, France, Portugal, Spain, etc. All these countries gradually occupied nations in Asia and Africa. Now when we talk about Asia and Africa were the undeveloped nations or the underdeveloped nations, and hence they established their colonies there. India was one of the colonies for England, and one of the main characteristics of colonialism is to transport the raw materials from the colonies to one's own country. मतलब यहाँ से raw materials, that is cotton, लेके गए थे किधर? England. So raw materials को transport करना, this was one of the main characteristics, and use the colonies as marketplace for selling their final products. That is final products वापस sell करने के लिए किधर आते थे? वापस India आते थे. That is why this was the main characteristics or main focus of all the colonizers. Colonialism indeed gives rise to political and economic slavery, but it also causes psychological slavery. Psychological मतलब mindset. जो colonizers जो country में जाते थे वहाँ के लोगों का mindset change हो जाता था. मतलब उन लोगों का mindset ही वैसा हो जाता था कि we are slaves. The racial attitude of the colonist countries and the subsequent treatment given to the native people creates a sort of inferiority complex amongst the mind of the people who are staying there. मतलब कुछ ना कुछ superiority, मतलब British Empire, मतलब British Empire used to go there, and वो inferiority लोगों के दिमाग में आ जाता था. भाई ये कौन है? कोई तो superior है. और ये इंडियंस के अंदर जहाँ पे वो लोग कॉलोनाइजर्स जाते थे वहाँ पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देते थे. बेसिकली दे डेवलप एन अपोलोजेटिक आउटलुक फॉर देयर ओन कल्चर, फॉर देयर ओन हिस्ट्री, एंड वही तो दूसरे कॉलोनाइजर्स को चाहिए था. हेंस दे बिगेन टू फील अनवर्दी एंड इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. It was the way to indicate worldwide spread of British colonies. The British Empire encompassed the continents of Asia, Africa, America and Australia. And there was a commercial revolution which came across. मतलब commercial मतलब with respect to business. So there was a commercial revolution in 15th century in Europe. As a result of the discoveries of new lands of various seafarers, about which we studied in the last chapter, there were many seafarers who came across. There was a traditional way of commerce, that is business, which changed radically. European traders began to establish their own market, and they started establishing their market firmly in two continents, and these two continents were Asia and Africa. The next part, dear students, we are going to understand is colonialism and meaning and nature of this colonialism. So, when we are talking about colonialism, Europeans reached all over the world with various intentions such as the urge for adventures. Some for urge for adventures, just for example Africa. To earn name, for example America. To discover unknown lands like Asia. In search of gold mines, again the internal parts of Africa. So later the trade and commerce increased to a great extent and the European countries began to compete with each other. मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ ही compete करने लगे कि किसका trade ज़्यादा किसका कम. Whenever the Europeans went, they established their colonies. There was a particular competition to gain economic, social and political supremacy. I repeat, economic, social and political supremacy in that area.
Because there was extreme nationalism, because there was feeling of racial superiority, and because of that, matlab skin color, race, on the basis of races, that is why industrialization, aggressive approach was also there along with that. मतलब सबसे पहला उसमें से 4 चीज़ों में से क्या था? Extreme nationalism, feeling of racial superiority, third one industrialization, and the fourth one here, aggressive approach. These are some of the important factors that led to the growth of colonialism. जैसे colonialism चालू हुआ, Europeans they started going to different continents. जैसे for example they went to America, Australia, New Zealand. They found these climate very much favorable for themselves. But जब भी वो एशिया आए, अफ्रीका आए, however it was not easy for them to adopt the climate of Asia, despite the climatic condition was not favorable or favorable. In their own lands, the Britishers, the Dutch, and the Portuguese and the French, they all devised several people for demoralizing the indigenous people. मतलब वहाँ के जो local people थे, Asians, Africans, जो वहाँ के locals थे, उन लोगों ने क्या किया? demoralize करना चालू किया कि तुम लोगों का एरिया खराब है, तुम लोगों का वेदर खराब है, तुम लोग ऐसे डाउन ट्रोडन हो, तुम लोग inferior हो. मतलब ये माइंडसेट लेके जब भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे, हेंस जब ये माइंडसेट यूरोपियंस ने सबके दिमाग में डालना चालू किया, द यूरोपियंस नीडेड टू कैप्चर न्यूअर मार्केट प्लेसेस ऑल्सो. बेसिकली दे वांटेड ट्रेड किया. अच्छा, रॉ मटेरियल्स लेके अपने इधर गए तो सेल भी करना था फिनिश प्रोडक्ट्स. सो फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए उन लोगों को मार्केट प्लेसेस चाहिए था फॉर सेलिंग देयर सरप्लस गुड्स. मतलब अपने यहाँ पे तो उन लोगों ने सेल ऑफ कर दिया, बट बाकी का किधर सेल ऑफ करना था? तो बाकी वो लोग वापस लेके जाते थे इन द अनडेवलप्ड नेशंस ऑफ एशिया एंड Africa. Now, increasingly basically which were accumulating as a result of mass production, because mass production था तो production बढ़ रहा था तो वो accumulate हो रहा था, caused by the industrial revolution. Besides, they also needed additional sources that would provide ample raw materials. In the latter half of the 19th century, England had built a very flourishing trade as a result of industrial revolution, and because of industrial revolution, the British with the help of their own naval force had established their supremacy in the Asian and African countries. बचा जब ये Asian and African countries में उन लोगों का जैसे जैसे बिजनेस स्प्रेड होता गया, द अर्निंग वॉज ऑल्सो देयर बिकॉज सरप्लस प्रोडक्शन था तो वो लोग सेल ऑफ करने वहाँ पे जाते थे. अर्निंग सरप्लस प्रॉफिट, इन्वेस्टिंग सरप्लस प्रॉफिट अगेन into business. So increasing trade was another thing with the colonies for good investment. So profit मिला वापस on that investment also. This was the mindset which was going on. This was unending chain. मतलब एक जगह पे स्टार्ट किया तो अर्निंग सरप्लस प्रॉफिट, उसके बाद इन्वेस्टिंग सरप्लस प्रॉफिट, वो इन्वेस्ट करने के बाद वो इंक्रीज किया ट्रेड विद कॉलोनीज, एंड वापस वो कॉलोनीज के ऊपर गुड इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी वापस प्रॉफिट मिला. मतलब एक पूरा सप्लाई चेन हो गया. दिस वॉज एन अनएंडिंग चेन. फ्रांस, बेल्जियम, Italy, Germany, these were the countries who, like England, strove to establish colonies. The next part that we are going to understand is colonialism. And in this colonialism, we are going to understand two parts, causes and consequences. So let us begin. Starting with causes. Now, causes. Why did colonialism come across? Industrial consequence. Now, there were many causes. Like, for example, the first one that we are going to study is industrial consequence. Now, industrial consequences, when we talk about industrialization, colonialism was a result of industrial revolution. Production increased enormously because of the new machines which came across. Now, machines आया तो production बढ़ेगा. However, the rate of local consumption was much lesser compared to the surplus production. बिकॉज सरप्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन था तो लोग खरीदने वाले नहीं थे. हेंस द इमीडिएट नीड ऑफ यूरोपियंस वॉज टू फाइंड द न्यू मार्केट प्लेसेस फॉर सेलिंग, and that is why they started finding out new marketplaces. It also needed necessary marketplaces where they can be dependable, कि भाई हम लोगों को ईजिली हम लोग उधर डोमिनेट कर सके. एंड दैट इज़ वाई जब भी उन लोगों को ये चीज़ चाहिए था कि उन लोगों को डोमिनेट करना था, दिस वॉज द टाइम व्हेन दे वांटेड रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स. नाउ उसके पहले जब भी प्रोडक्शन चल रहा है वो तो ठीक है, बट उसके पहले रॉ मटेरियल्स तो लाना पड़ेगा. रॉ मटेरियल्स लाने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर टू कंपीटिंग नेशंस इन द मार्केट.
मतलब दूसरे यूरोपियन नेशंस के साथ कंपेयर करने से अच्छा हम लोग खुद का ही लो कॉस्ट प्रोडक्शन चालू कर देते हैं. वी डोंट केयर फॉर एनी अदर कंट्रीज. हियर द डिजायर टू क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट वॉज नेसेसरी एंड द नीड टू प्रोक्योर द रॉ मटीरियल्स एट अ वेरी चीपर रेट to procure raw materials at a very cheaper rate were two major factors. I repeat, सबसे पहला create monopoly, second cheaper rate पे खरीदना. These were the two main factors which made it necessary or which made it essential for the European nations to establish their supremacy. अभी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना था तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, रॉ मटेरियल्स की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो सरप्लस कैपिटल इन्वेस्ट करना चालू किया. सो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज, इन्वेस्टिंग सरप्लस कैपिटल. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच केम अक्रॉस एडेड टू द वेल्थ ऑफ द यूरोपियन कैपिटलिस्ट हु वर ऑलरेडी रिच, मतलब रिच बिकेम मोर रिच and जो poor थे they were becoming more poor. Hence they started searching for secured marketplaces to invest their surplus fund. मतलब जो extra fund था वो उन लोगों ने invest करना start किया. The markets in the less developed countries were quite secured from this viewpoint. Thus, the availability of surplus capital facilitated the rise of colonialism. And जब भी rise of colonialism आया, tell me one thing, colonialism आया तो सब countries मिलके क्या करते थे, they were finding the sources. मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जब भी देखा कि less developed countries they were getting exploited, तो वो लोग क्या करते थे, exploit कैसे करते थे, by taking minerals. So there were many sources of minerals which came across, that is the countries in Asia and Africa, that is the fourth cause, sources of minerals. The countries in Asia and Africa had rich sources of minerals like gold, diamond, silver and coal, etc. These attracted the European merchants to various regions of Asia and Africa. And जब ये एशिया एंड अफ्रीका के रीजन्स ढूंढना चालू किया, एशियन कॉन्टिनेंट या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी कौन सा कंट्री था ऐसा जहाँ पे ढूंढना ज़रूरी था, तो उन लोगों ने क्या देखा, फिफ्थ कॉज, जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस. The geographical importance, that is European nations had realized that the geographical locations of some regions of Asia and Africa are advantageous for trade because see, simple words में एशिया में बात करें इंडिया का तो ऑफ कोर्स ट्रेड की वजह से इंडिया कैसे अच्छा हुआ, मतलब फेमस क्यों था, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया वाज अ पेनिनसुलर रीजन, 3 साइड सराउंडेड बाय वाटर, 1 साइड बाय लैंड. अगर 3 साइड सराउंडेड बाय वाटर, 1 साइड बाय लैंड मतलब क्या, वाटरवे से ट्रेड इजी था कि डिफिकल्ट था, ऑफ कोर्स बहुत ईजी था. एंड दैट इज वाई एशिया एंड अफ्रीका वॉज basically advantageous for trade. Malta, Gibraltar, Aden, Singapore, Andaman and Nicobar were some of the regions where the British established their hold. Now जब भी उन लोगों ने geographic importance देखा वहाँ पे उन लोगों ने होल्ड रख दिया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री बनाया. अच्छा, वहाँ पे इंडस्ट्री बनाया तो वहाँ पे लेबर चाहिए था और लेबर तो इजीली अवेलेबल था इन द अनडेवलप्ड नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. सो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर वाज देयर. European merchants needed large number of laborers at a very cheaper rate. The colonies fulfilled this need. हम लोग तो भाई सवाल ही तैयारी जब भी आए थे तभी से थे, अतिथि देवो भव, तो हम लोग तो तैयारी थे. Later it contributed to the boom in the slave trade also. Because of this slave trade चालू हुआ मतलब क्या, slaves को वो लोग लेके जाते थे, बंदी बना के लेके जाते थे अपने यूरोपियन कंट्रीज में एंड दूसरे सब कंट्रीज में भी सेल करते थे. इसके लिए यहाँ पे जब भी स्लेव ट्रेड चालू हुआ, बिकॉज स्लेव ट्रेड क्यों चालू हुआ, याद आया हम लोग ने पढ़ा था इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. तो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों के या उधर के जो लोग थे जहाँ पे कॉलोनाइजर्स जाते थे उधर के लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि भाई हम लोग इंफीरियर है. हम लोगों का रेशियल इंफीरियोरिटी भी है. रेशियल इंफीरियोरिटी मतलब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर. हेंस द फील ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी स्टार्टेड हियर. द यूरोपियन colonialist claimed to be their responsibility to civilize the people of Asia and Africa. मतलब वो लोग आए, उन लोगों ने बोला हम तुमको सिविलाइज करेंगे. Hence this assumed the role of Europeans resulted in the conversion of many Asians and Africans to Christianity. And there were so many Christian missionaries who came across. Now who are missionaries? Missionaries are the people who travel from one place to another. I repeat, the one region to another, the people who travel from one region to another or one country to another to spread their own religion. So वो यहाँ पे वो बहुत सारे ब्रिटिश मिशनरीज आए थे, वो क्रिश्चियन मिशनरीज थे. तो एशिया एंड अफ्रीका में बहुत सारे लोग थे जो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने लगे. ऑल्सो हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ कोलोनियलिज्म. सो दीज वर द कॉजेज ऑफ कोलोनियलिज्म. सबसे पहला कॉज हमने देखा
इंडस्ट्रियल कॉन्सिक्वेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल था तो एक्सेस प्रोड्यूस किया तो एक्सेस पैसा भी आया। एक्सेस पैसा क्या किया, वापस इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टिंग सरप्लस कैपिटल। इन्वेस्टिंग सरप्लस कैपिटल 3 हुआ। चौथा क्या था, कैपिटल इन्वेस्ट किया। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कैपिटल इन्वेस्ट तो किया बट देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस कैपिटल ऑल्सो। तो फोर्थ वन, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स वर देयर, मतलब मिनरल रिसोर्सेज भी बनना चालू हुआ। मिनरल रिसोर्सेज बना तो हम लोगों ने देखा वाई, बिकॉज जहां पे जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस था वो सब जगह पे मिनरल रिसोर्स बनना चालू हुआ। जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस था तो वहां पे हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मौका मिला। तो सिक्स्थ वन, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। एंड जब भी लेबर अवेलेबल था वो अनडेवलप्ड नेशंस में, जहां पे एशिया एंड अफ्रीका में उन लोगों ने कैप्चर किया, तो वहां पे उन लोगों ने, यूरोपियंस ने क्या दिखाना चालू किया, द फील ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। तो फर्स्ट वन इंडस्ट्रियल कॉन्सिक्वेंस, सेकेंड वन requirements of raw materials, third one investing surplus capital, fourth one sources of minerals, fifth one geographical importance, sixth one availability of labor, and the last one, that is the feel of racial superiority, came across. These were the basic causes of what, the rise of colonialism. The causes for the rise of colonialism. Next part, consequences. Now the people in Asia and Africa were economically exploited by the Europeans. The people in the colonies lost their independence. जो वहाँ पे कॉलोनाइजर्स थे, जो उन लोगों ने वह जो कंट्रीज़ में कैप्चर किया था, उन लोगों को इंडिपेंडेंस ही नहीं दिया। देयर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पुश देम इनटू पॉवर्टी, मतलब कॉलोनाइजर्स ने लिटरली गरीब बना दिया वो देश को, एंड खुद पैसा लूट के जा रहे थे। एट द सेम टाइम वी मे ऑल्सो नोट सम कंस्ट्रक्टिव थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अ न्यू अवेयरनेस इमर्ज्ड इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड। सो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड्स में कुछ ना कुछ अवेयरनेस लाना उन लोगों ने स्टार्ट किया। अवेयरनेस इन द सेंस ऑफ व्हाट, मतलब लोगों को, वहाँ पे जो कॉमन मैन था उन लोगों को सिखाना चालू किया। दे स्टार्टेड मेकिंग देम कॉन्शियस अबाउट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। नाउ जस्ट इमेजिन द आयरनी ऑफ लाइफ। खुद इंडिपेंडेंस देते नहीं थे, खुद फ्रीडम देते नहीं थे, बट दे यूज टू टीच देम, मतलब डेमोक्रेसी के बारे में सिखाते थे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी दैट इज इक्वलनेस, एंड फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, ये सब के बारे में सिखाते थे। दे गॉट इंट्रोड्यूस्ड हियर to principles like administration based on fundamental legal system, judicial system, availability of education to all, ये सब इंट्रोड्यूस कराना चालू किया ये सब कॉलोनाइजर्स ने। नाउ पीपल स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर ऑफ द नीड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, हेंस विच इवेंचुअली लेड टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मैनी कॉलोनीज। मतलब अभी तक इन लोगों ने ये सब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को सिखाना चालू किया। जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल लीगल सिस्टम मतलब बेसिक लीगल सिस्टम, टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ये सब उन लोगों ने सिखाना चालू किया। और जब ये सिखाना चालू किया तो उन लोगों को रियलाइज होने लगा, लोगों को, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो कंट्रीज़ के लाइक एशिया एंड अफ्रीका, उन लोगों को रियलाइज़ होना चालू हुआ कि यार अगर ये सब हो रहा है तो वी आर नॉट गेटिंग ऑल दीज थिंग्स, मतलब रादर दीज कॉलोनाइजर्स आर ओनली नॉट गिविंग अस दीज फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, एंड दैट इज वाई दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीजन वाई इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। सो इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड इन ऑल दीज कंट्रीज। तो आगे क्या हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड।